Hello, everyone. Wishing you all a very happy weekend. And here we are. We are here again to talk more and more about weight. So this live is regarding weight issues. It can be weight gain, it can be weight loss, it can be any issues related to weight or any disorder which is caused by weight. So let me read the disclaimer first. Because that is very important. So I'm doctorate in nutrition and a former academician by profession. The information I share through my videos or through the live on YouTube is always supported by evidence-based researches and based on my personal experience, my academic achievements, and learning through PhD, postgraduate diploma course and certifications, and my 20 years experience as a lifestyle nutritionist and a meal planner. This is to remember that the views shared here are for journal reference only and to get personal diet. Sorry, and to get personal diet that is tailor made for you, that is designed for you, you need to consult me personally or any other qualified nutritionist. And this is always to be remembered that each human body is as unique as a fingerprint, and so one diet never fits all. Um, Individual results are not assured and may vary, and I cannot and will not guarantee you all will attain a specific or particular results. As result differ from individual to individual. The health, fitness, and the nutrition success depends on each individual's background, his or her dedication, desire, and motivation. As with any health related program or services, your results may vary and may be based on numerous variables like your individual capacity, life experiences, health issues, unique health, your genetic profile, standing profile, the point at which you are starting, your expertise, and your level of commitment. So that is all with the uh, disclaimer. And I have my cute friend with me, Shweta. Hi, Shweta. And today we are talking about weight issues. So before starting, let me let you know that why do we have this weight issue and what are the components of human body and why this weight becomes such an important thing whenever it comes to weight loss or weight gain or your individual health. So your body comprises of bone, muscle, blood. Uh, these are the main and your tissues. So these are the major components of weight in your body. So when you are standing on weighing scale, your bone is also counted. The water in your body in form of blood is also counted. Then your muscle weight. The lean body weight, the water weight, the bone weight, everything is counted. And then the fat, the visceral fat, the adipose fat, everything is counted. So when we are talking about weight, it is always about uh, weight which can be altered. So um, your skeleton weight, your bone weight cannot be altered. We would never try and touch that weight, and it is not in our hand. So, what is left is the water weight and the muscle weight and the adipose tissue. So, we concentrate or we advise everybody to have only and only weight loss which is in a form of fat loss and not water loss and not muscle loss. So what happens is at times, many a times it happens that you lose weight overnight. Okay. Or something happens that you do within a week, or you had some liquid or some diet, and then you lost 3 kgs of weight within a span of 2 days, and that gives you a very nice feeling. Okay, that yes, there was a weight loss. And always when the weighing scale, the numbers go down, it is always good to see that yes, the numbers are moving and they're moving on a downward trend. So it's always a good thing to see that. But remember, my dear friends, whenever your weight loss is sudden, that is, it is more than 1 kg within a span of 1 or 2 days or within a span of 50 hours, it will return back
It is not something which is very healthy. So what WHO advised, WHO is a World Health Organization, and the World Health Organization always advises is that you should lose only up to 500 grams of weight in a week. That means not more than 2 kgs. Okay. Max to max, you can lose up to 4 kgs in a month. So we take a criteria. 4 kgs means approximately 500 grams to 1 kg is a loss that is expected in 1 week's time. And we ideally take it as 700 grams. Okay, because 700 grams अगर जाएगा तो थोड़ा वापस भी आ जाएगा, तो that is okay. But if you lose immediately, if you lose more than 1 kg of weight, more than 2 pounds or 3 pounds, it is always dangerous, because it is not healthy. Because अगर आपका वेट बहुत जल्दी से नीचे जाता है तो कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है बॉडी में, and that weight will come back, it will bounce back quickly, very quickly, and it is not helpful. So when it comes to water loss, what happen? It happens only when there is bloating. Okay, तो बॉडी में ब्लोटिंग है, बॉडी में वाटर रिटेंशन है. इट कुड बी ड्यू टू many reasons, and I have videos, and I'll share the link also, that there are many issues due to which the body retains water. It can be due to kidney issue, it can be due to bloating, it can be due to something which you have eaten and it is not doing good to you, some allergen you have had. You can have any medicine which retains water in your body, or if you have excess of salt. अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो नमक को शरीर में रुकने के लिए पानी चाहिए होता है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो जाती है. एंड देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर few of my YouTube videos that what causes bloating, and how is bloating confused with how is when the bloating is relieved, how is it confused with your weight loss. So the first way to identify the difference between bloating and your tummy fat is that you have to hold your tummy within your fingers and try to poke your fingers inside. So if you are able to poke your finger inside your tummy, that means it is a fat. वो फैट है, उधर चर्बी है. And if your finger is not going inside, it is distended, the stomach is distended, you're feeling uneasiness, and वो ऐसा लगता है that it will burst out, then it is bloating, and there is some gas inside, some allergen you have eaten which may have caused that water retention, bloating, that gaseous situation. So that's a very uncomfortable situation to be in. And the moment you have some reliever, you have some water, or you exercise, or there are things that laxative kinds of things, or there are something which helps you get rid of that water, instant relief. You'll have instant relief. The stomach is flat again. You will have a feeling of lightness, and that's a very nice feeling when the bloating is eased out of your body. So the water retention is eased out of your body. So that's something very different. But when it comes to weight issues, weight loss, it has to be very, very steady. It goes as simple as that. How much time did you take to reach from your X weight to today's weight? So उतना ही टाइम लगेगा अपने वापस से उस टारगेट वेट पे जाने के लिए. If it didn't happen overnight, इट विल नॉट बी क्योर्ड ओवरनाइट. ठीक है ना. अगर एक रात में वजन नहीं बढ़ा है तो एक रात में वजन नहीं उतरेगा, और अगर एक रात में वजन चढ़ गया है तो दैट मींस इट्स व्हाट वेट दैट यू आर कैरिंग, वो एक ही रात में उतर जाएगा. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. फैट वेट विल टेक टाइम. It will take its own sweet time to get rid of. You will get its own. You will take your own sweet time to get rid of that fat weight. और बहुत आसान है. It's not at all difficult. Simple things to follow, and then you are good to go. So what we are talking today here is fat loss and weight issues. So weight issues, there are many people. I have a client here. She is let me see the details. She shared it with me that she is a 20-year-old girl with
165 centimeters, and her weight right now is 40 kgs, which is too less. So how do we determine ideal body weight? Simple बहुत आसान तरीके में जब हम बात करते हैं, although ideal body weight is dependent on your genes, your origin, your ethnicity, the place where you are living, the exercise that you are doing, your activity level. Okay, so a gymnast ideal body weight will be a different from her twin sister who is just an office worker. So there's a huge difference, and basically how we calculate is for women, that is the basic rule that we follow. So please feel free to post your questions and I'll take up. And if you don't want your name to be taken, I won't take your names. So that goes on unsaid. That's an unsaid rule. Okay. So ideal body weight for this girl, it has to be with 165 centimeters, has to be somewhere around 60 kgs or even less. So we take it as 52 kgs to 57 kgs to be on a safer side. But her height, as per her height, she is just 40 kgs, which is quite less. And since she is in her childbearing age, it is very important to have a ideal body weight, because anything which is not correct as per your weight during your childbearing age can have a direct effect on the baby, and the new baby may be born with the new baby will be born perfectly okay, but in the future life he or she may have lifestyle disorders like diabetes, hypertension. So that is very important that the fetus should get proper nutrition so that the adulthood of that fetus is secured. So it is very important that the girls and boys of that childbearing age should have proper meal, eat proper food, and keep themselves healthy. And especially no fat diet, no crash dieting during those age, at least up from 50, till the age of 30. I'll prefer children or young adults should not have any kind of diet. So what do they should do is that instead of cutting down on their food, first they should emphasize more on their exercise. They should do more of workout, more of walking, more of jumping, more of rope skipping, running, swimming, get into outdoor games. And if that doesn't help, then they should cut down on the food part. But yes, the first thing is cut down on the junk part of the food, and then exercise more. So even for school going children, I have always advised that you should always run more. To the mothers also have told, if you wish your children to be healthy and within their proper weight range, the kids should run more, exercise more, play all the games that they wish to play, and keep themselves away from gadgets. At least 2 to 3 hours of physical activity is very much required, and then they can cut down on the food, which is the later part. And we have and it is very crucial for these kids to cut down on their food, because somewhere or the other, if we cut down food which is very important for them, it may lead to serious issues in their age when they are in their 30s and 40s. So I have a question here that if I eat 1500 calories a day, will I lose weight? And can I eat? There are two questions, so I'll take both of them simultaneously. If I eat 2000 calories of junk food daily, will I be healthy? And the other one is, if I take only 200 calorie food, will I be healthy? So now these are the questions from the WhatsApp that is connected. So there are two things that has to be taken in account, that you should not count calories. That's your dietitian's job. You should not count calories. So what should you count? What do you do? You have to consider having more and more of colored foods in your plate. So like, you need to have at least 5 to 6 colors of food in your plate. That is very, very important. So it can be
a chapati can be, your cereal can be one color, then you have your dal, then you have your proteins, salad, then milk by the side, or charged lassi or chia seed concoction by your side. So that makes a very healthy plate. So all eating, you might love rajma chawal. That's only two colors in your plate. They might be healthy, but to make it more healthier, you need to have those cucumbers, tomatoes, radish by your side, steamed broccoli, and all those things. So उन चीज़ों को बहुत बहुत साथ में मिला के खाना बहुत ज़रूरी है. सो राजमा चावल में बी हेल्दी. I don't deny that yes, they are very healthy. It's a cereal pulse combination, and the amino acids in the rice is of a very good quality, and the proteins in the red beans are of very good quality. So they need to be taken together. But yes, you need to add too many colors to your plate. And then what, 2000 calories junk food? That's a really amazing question. So what you have to do is, when we are taking junk food, so what is junk food? It has only sugars, it has only fats, and it lacks in micro and macronutrients. Okay, तो जैसे आपके पोटैटो चिप्स हो गए, चीज़ हो गया, और आपके ये हो गए सूप्स हो गए, जिनमें जो those are the strained juice soups and juices. So what they have empty calories, they have only sugar, they might have only fat, they have high carbohydrate contents, trans fatty acids, but micronutrients like calcium, iron, potassium, fiber, where is that? Where is the protein part? So having 2000 kilocalories of junk food will not help you lose weight. You will gain weight and you will land up in soup. So that's not the right thing. You need to be correct. You need to correct on that thing. And then I have a question here. It say the person is asking, should women take Herbalife products? My wife is recommended to take it for weight loss. Okay, so we dietitian are not here to endorse any products, and Herbalife products or any such kind of products, they are made for masses. So when you consult a qualified dietitian, or when you consult a qualified nutritionist, she will plan a diet specifically for your self. It is similar like this कि अगर आप blindfold होके आपको market में छोड़ किसी mall में छोड़ दिया जाए to any designer shop, you will pick up any dress, and it's just your luck if that fits you. But if you are going for competition, or if you're going for a marriage, or if you're going for any special occasion, you'll go to a designer shop, you'll go to a designer boutique, you'll hire an expensive tailor to design your shirt, you to design your dress, so that it is made exclusively for you, and that goes with the diet also. So अगर आपको डाइट चाहिए जो सिर्फ आपके लिए हो, जो तो आपकी dietitian will help you get a diet which is tailor made for you. That is very important. So Herbalife product I would not prefer, but you still need to check what you can. I'll just write my email ID here, so you can send me the details. Just a moment. Let me write it down. So you can connect me here, but I'll share the tips for weight loss. And before going for weight loss, I need to check what is the cause of weight gain. So it is very important before starting any products, you need to keep these products as a last resort. These should not be a first resort. These should be a last resort. So please be with me, Mr. Sol, or Mr. Sol, and I'll let you know what are the precautions that can be taken, and follow them for 1 month and see how the trend is going. And then we have this question from my friend. She says, what food one should avoid for bloating, especially if ladies above 14, and intermittent fasting versus normal fasting. We have this question also. So first, for foods to be avoided for bloating. So bloating happens due to many reasons, but one of the major reason is that you ingest some food which is not healthy for you. Okay, so it can be there are since each human body reacts differently to different food items, so
There can be food items like wheat. Some people are allergic to wheat. That can be one thing. Then there is lactose intolerance. But I would suggest that before coming to any conclusion, you need to get yourself medically tested, check with your reports that is your body allergic to these two things. Then there can be certain food items like beans, uh, fruits and vegetables from um, cruciferous family like kale, um, cauliflower, and then radish. So these are food that provide that are gaseous, and there are some certain fermented foods. So what happens is inside your body when these foods are inside your body and there is less of fiber, what you need to do is that what happens is that these products go inside your stomach and they start fermenting, and when the fermentation happens, carbon dioxide gas is produced. And when the carbon dioxide gas is produced, obviously there's a distension in the body. So there is a bloating, you will gain weight overnight, 1 kg, 2 kgs weight is there. It often happens that you're getting ready for the office, the dress is fitting you very nicely, and the shirt buttons are closed very nicely. But by the time it is evening, or by the time it is 2 or 3 o'clock, you are feeling suffocated in the same clothes. That means there is something which your body is allergic to it. And these allergies can happen anytime. It is not that you have to be suffering from those allergies since your childhood. They can happen anytime because there is so much variation in the food that we are getting. The food is processed so much that any moment of time you can get allergy to these foods. So um, you need to be aware. Excuse me. So that is one thing. Then if you have too much of salt, if you have too less of water, if you're eating food which is fried in trans fat, if you're having too much of sugar, there are chances that you are bloated. So uh, what things to be avoided? First thing is you start making, for everybody here, you need to write a record of what you are eating. Start noting down what you are eating. I know it is tedious job, but start making notes what you are eating, and then within a week you will come to know that what is causing you bloating. So for those who wish to leave wheat without getting yourself checked up, I always suggest that do not leave wheat. आटे को बिल्कुल मत छोड़िए. What you can do is that mix other flours more so that you have more and more of fiber, and so that the wheat issue that you have can be cured. Isabgol lena shuru kijiye. Isabgol is a very good fibrous food. Salad lena shuru kijiye. Mr. Sol, this will help your wife also. 2 bowls of salad, one before lunch and one before your evening tea. So one can be a vegetable fruit salad and a vegetable salad plate, and the other can be fruit salad. So having a salad bowl before your lunch, that means you sit with your entire meal in one go. Do not go and pick up things again and again, but first finish your salad and then go to the other plate which has your chapatis and other things. So that is very important. What we do is that हम एक बाइट चपाती लेते हैं, फिर सलाद खा लेते हैं, फिर एक बाइट चपाती लेते हैं, फिर सलाद खाते हैं. ऐसा नहीं करना है. You finish your salad first and then have your chapati, dal, sabji, whatever it is, on the next go. So this has given me quite a good results. When you finish your salad first and then you finish your chapati and the other things, that needs to be taken care of. Things that you have that there is bloating in those things, you need to avoid them for some time. And then one very good remedy for bloating is, I have tried and tested this. So what you need to do is 1 hour before your meal. So whenever you're trying all these new things, it has to be taken before your lunchtime, so that you have an entire 6 or 7 hours gap before you're going to sleep. So around 12 o'clock, if you're having your meal at lunch at 1 o'clock, around 12 o'clock, take a plain glass of water.
mix 1 teaspoon of baking soda in it. So it is baking soda, not the baking powder. So put that baking soda and mix it very nicely till the water is transparent again. Okay. Now, so this glass, 1 glass of water, you have to finish in 5 minutes. It is very tasteless. It is yuck. Okay. So उसको आपको सिप करके पीना है, and then and continue this for 1 week. This has to be continued for 1 week, so all your bloating will be sorted out. Then there are certain foods will help you release your bloating, but yes, again, fruit I cannot name because some people may be allergic to that food, some people may not be allergic to that food. So I insist more on fibers. Okay, so in the same way that banana is very good for, it may cause bloating in many, but it may ease bloating in many. So best time to have banana is early in the morning before breakfast. Okay, that is very important. Fibers are very important. Isabgol, I on blanket, on a blanket way, I can say that every person above 40 years should start taking isabgol at 1 hour before lunch, so that 1 hour before their dinner, so that they are relieved of their cholesterol. So न्यूट्रिशन बुक्स में इसबगोल हमेशा cardiovascular disorders में आता है. When there's diet related to cardiovascular disorders, we have isabgol there, and the side effect is that it cleans the, it helps in bowel cleaning. So when you reach age of 40, you start having isabgol for your heart. It clears all the clogging in the arteries of the heart. So that is very important. And the side effect is that it cleans the bowel. 90% लोगों में रहता है, 10% लोगों में नहीं रहता, and it's not an habit. So you need to take that, and those are things. Having water sip by sip is very important for bloating. Curd is very important in case of bloating. में कच्ची लस्सी, आधा पानी और आधा दही मिला के आप उसको मिक्स कीजिए. डू नॉट ऐड एनीथिंग, सिर्फ काली मिर्च मिला के पी लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके नमक बहुत ज़्यादा चला जाता है बॉडी में, एंड यू नो बॉडी डजंट रियलाइज, और इवन यू डोंट रियलाइज कि कहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा करके खूब सारा नमक खा लिया है. तो I hope that is good with the question related to specifically for ladies of 40 years age, and that's a good reminder for my upcoming video. The upcoming live session will be on diet for ladies above 40 years of age. So thank you, my dear friend, for this. And then we have another question, which is intermittent fasting. Same calories in intermittent fasting and normal fasting. So what is fasting basically? Fasting is abstaining yourself from having food for a certain number of time. So intermittent fasting has been in our culture since long. Okay, we have been following it because सूर्य उदय के बाद खाना खाना है और सूर्य अस्त होने से पहले हमें खाना खा लेना है. So that is a kind of intermittent fasting. It is giving good results to many, but in case if you are hypotensive, blood sugar is there, you have kidney issues, or you have any related lifestyle disorder or a metabolic disorder, you cannot go on your own having with intermittent fasting on your own. You need to consult a doctor or a qualified dietitian for that. It is very important because she or he will be able to guide you how much amount of food to be taken. वो ऐसा रहता है कि 16 आवर की विंडोज में आप कुछ भी नहीं खाते हैं, ओके, एंड देन यू बिंज ऑन इट. सो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और वो 16 आवर की विंडोज में आप क्या क्या खा सकते हैं, that is also very important, because at that time autophagy happens, and that's a very good method of weight loss. But that autophagy has to be taken under the instruction of a doctor or a qualified dietitian. Google will not help you. Dr. Google or WhatsApp University or WhatsApp forwards will not help you in any way during that intermittent fasting. Even if you are on same calories in intermittent fasting and normal fasting, there is a huge lot of difference, because the intake of food, your intake of food during normal fasting and your intermittent fasting is very different. So how to start with intermittent fasting?
what all to eat plays a very important role when you are doing intermittent fasting to get good results. And to switch over from intermittent fasting back to normal food is very important, क्योंकि वहीं पे लोग गड़बड़ कर जाते हैं. इंटरनेट पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी मेंशन नहीं हुआ how to wean yourself from intermittent fasting and go back to normal food. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वहीं पे फिर वो वेट जितना लूज किया है लोग वापस उतना उससे ज़्यादा ही गेन कर जाते हैं. एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट योर वेट इज लाइक अ फुटबॉल. उसको धीरे धीरे धक्का मारोगे तो वो आगे जाता रहेगा, धीरे धीरे आगे जाता रहेगा. बट द मोमेंट यू किक इट, द मोमेंट यू have a good weight loss, it will bounce back. The same, I mean, this is how the football behaves. The same goes with the weight loss also. तो धीरे धीरे weight loss होगा तो बहुत अच्छा है. जहाँ आपका 5 किलो इकट्ठा चला गया एक महीने में, वहाँ जी I am sure you'll get 7 kgs back. So that has to be taken care. So we have another question. It says, "Good evening, madam. My question is recently I have started going to gym. That's very good. My daily workout routine includes cardio, yoga, Zumba, and meditation. No weightlifting. I'm a bit confused about my diet. And I ordered whey protein and pre-workout, and I need more info on daily diet. My weight is 74 kgs. Okay. So, Miss Srivas, you can correct me over Gmail ID that I have mentioned. You can correct me there because I need some more details regarding this. It is very good that you have started cardio, yoga, Zumba, and meditation, which is very good. Diet works on all these things, but I'll prefer if you have not started taking your whey protein, kindly refrain yourself for taking them for another 15 days. Connect with me for your diet, because when you're doing these diets and if you take unwanted amount of whey protein, pre-workout, it will give you a very bad result when you stop working out. So a healthy diet can provide you with all the whey protein, all the proteins that you're required. So if you are leaving your home, if you're going to gym after your breakfast, 2 hours after your breakfast, you do not need your pre-workout meals. And when you're coming home and then you're having your dinner after your gym or lunch after your gym, you do not need a post workout meal. Okay, so in an Indian diet we can manage all those things. What you have to do is instead of whey protein, start emphasizing more on beans, rajma, safed chana, besan, soya bean, hari pattedar sabjiyan. Start having all these, because these are very good in proteins. And then you can have 2 bowls of yogurt in a day. So I have these things. I kept it because last time I couldn't keep it. So this size of bowl has to be your dal plate. Okay, itni dal to khani hi chahiye. So I take 2 bowls of this dal. This is your curd bowl or your Swedish bowl, so at least 4 bowls of this. And then you need to have the snack box, which is quite a small thing as compared to this. So this 1 box of snacks you need to have. So this snacks can be your walnut, it can be your bhuna chana. I believe more in showing things rather than क्योंकि वो ज़्यादा देर तक रहेगा. You can have this bhuna chana. You can have this apricots. These are dried apricots, very rich in calcium, very good in micronutrients. Or you can have this almonds, or you can have this a very good combination of nuts. It has all the kinds of nuts, and then you can add your own nuts. And for ladies above 40, it is very important to have this much nuts daily. Okay, so 5 walnuts आप रात को भिगो दी सॉरी 5 almonds रात को भिगो दीजिए, 1 walnut भिगो दीजिए, 5 किशमिश भिगो दीजिए और 1 अंजीर भिगो दीजिए. तो that should be the first thing you eat in the morning after freshening up, after brushing your teeth, and it will give you a excellent pre-workout meal, which is very high in omega-3 fatty acids, very high in protein. It will lubricate your knees. It will give you high iron, because kishmish hai to iron bhi aa jayega. For ladies, it is very important to have this much dry fruits a day. Divide them throughout your day, and then you can have it. Or
थोड़ा थोड़ा खाने से bloating नहीं होती है, तो you need to have at least 3 to 4 meals a day, which is divided throughout the day. And when the sweet girl, Miss Srivas, so you need to divide. Do not expect excellent weight loss or good weight loss within a matter of days. Give your body 2 months time, and I emphasize more on inch loss rather than weight loss. I never ask my clients कि आपका weight कितना है. What I ask is कि jeans कितनी loose हुई है, regular pants कितनी loose हुई है, shoulder से कपड़े गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, and are you able to fit in your bangles nicely, is the ring coming out of your finger. छोटी छोटी चीजें हैं, but these count, okay. और sandals, are you able to fit in into your slippers or not. फैट है कहीं भी थोड़ा सा भी जाता है ना, तो इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस. एंड आई आस्क देम, टेक आउट योर ओल्ड वार्डरोब, उसमें से जो आपकी फेवरेट ड्रेस है वो निकाल के रखो, एंड द मोमेंट द डे दैट विल फिट यू विल बी वेरी हैप्पी. तो दीज आर द स्मॉल, these are small prizes that helps you. So weighing scale is very monotonous. It is not a good guide for weight loss, inch losses. Ms. Rivas, I request you to send me more details. You can correct me over Gmail, and I'll ask you more questions with regard to this. But do not overdo, because cardio, yoga, and meditation itself is more, and is too much, and then you are involving yourself in Zumba also. So do not do them on a regular basis. Keep Zumba and yoga and meditation different, and cardio different. Do not exert yourself too much. Go very slow so that you can have good results. Okay, then we have a very nice question from my friend from my school. What if we have low blood pressure? Isn't salt recommended? What kind of food? What can you tell in such situation? So in case of low blood pressure, it is more dangerous than high blood pressure. Low blood pressure is more dangerous. So what we recommend is, okay, salt, आप थोड़ा सा नमकीन खा सकते हैं उस समय, बट व्हाट वी प्रेफर इज वी आस्क यू टू हैव मोर ऑफ कॉफी. You can have milk coffee. That is one thing. Other thing is you can have milk with लॉन्ग, उसमें लॉन्ग उबाल के आप मिल्क ले सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नीड टू हैव फूड थ्रू आउट द डे. That is one thing. And for BP, do not start medication. Go with the alternate therapies. That is very important. And इन केस ऑफ, ठीक है, अभी लग रहा है कि बिल्कुल सिंकिंग फीलिंग हो रही है, कानों में से हवा आवाज आनी शुरू हो गई है, तो दैट्स अ साइन दैट ब्लड प्रेशर बहुत नीचे हो गया. तो थोड़ी सी नमकीन खा लीजिए, चीनी खा लीजिए. ऑलवेज कीप ORS एट योर होम सो दैट यू कैन मिक्स इट एंड हैव इट. मिल्क इज अ वेरी गुड सोल्यूशन. कच्ची लस्सी या छाछ जिसको बोलते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. देन high fiber foods are very good in case of hypotension, जब आपका blood pressure low होता है. And keeping toffee in your pocket is a very good solution for all those things. उसके बाद जो रहता है आपको, keep on having dry fruits. Do not opt for salted dry fruits. Dry fruits are very important. Something like this will keep your blood pressure on the go, on the right way. Chewing things for a very long time is very important, especially in the case of, I missed out this thing for Miss Mandra. If you are suffering from bloating, it is very important that you need to chew food very slowly. नहीं पता चलता हमको, हम कई बार बहुत सारी गैस बातें करते करते अंदर ले जाते हैं. That has to be taken care of. Chewing gums have to be avoided. So chewing food very slowly is a very good solution for bloating. मुंह बंद करके खाना, ऑब्वियसली हम सब मुंह बंद करके खाना खाते हैं, पर खाना खाते खाते जो हम बातें करते हैं या कभी हम टीवी देख रहे होते हैं तो सम सीन तो हमारा मुंह खुला रह जाता है. It may sound funny, but these are the facts and these are recorded, and I'll share the details. I'll share those journals also, research also, papers saying that yes, कहीं ना कहीं मुंह में हवा जाने से, पेट में हवा जाने से bloating हो जाती है, because that air is trapped inside the body, because the food that you are eating, the gas is not able to come out, and then the food gets an extra carbon dioxide and oxygen body where it starts fermenting. So that is very important.
तो जब भी आप ड्राई फ्रूट्स भी खाएँ तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल रूल है कि आप 5-5 बादाम भी खा रहे हैं तो उनको आराम से take at least 5 minutes to chew it so that it becomes a paste in your mouth and then you ingest it. Okay, so this chewing part has to be done in mouth and not on it. The stomach should not be overloaded. Stomach का काम सिर्फ उसको digest करना होना चाहिए. Chewing part has to take place in your mouth only. So it is very important to chew each and everything very nicely. हम इंडियंस के साथ ये इशू है कि हम इशू कह लीजिए या क्या कर लीजिए, बिकॉज वी रिस्पेक्ट फूड, हम अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं एंड वी प्रे आर फूड, फूड इज़ वेरी पायस फॉर अस, तो हमें उसको गरम गरम खाना होता है। उस गरम गरम खाने के चक्कर में हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा जाते हैं। We take 3 hours to cook a food, 4 hours to decide what we have to cook, how we have to cook. Pre-preparation and preparation takes 2 to 3 hours, and we finish our food in 10 minutes. And this is such, we are doing so bad to our food. This is not at all logic. This is not at all reasonable. We are not doing justice to our food. So बहुत धीरे धीरे खाना खाएं, उसको चबाएं, so that it starts getting digested in the mouth with the help of your saliva, and then your stomach is not overloaded. That is very important thing. And for low blood pressure, please do not rely on chips and anything else. Have full meal and eat your meal very slowly, and you need to have 3 main meals and 3 snacks. So you need to cut down on your major meals, उनको थोड़ा छोटा कर लीजिए और स्नैक्स को थोड़ा हेवी कर लीजिए। तो स्नैक्स में आपके भुने चने आ जाते हैं, घर में बने पॉपकॉर्न आ जाते हैं जो माइक्रोवेव वाले नहीं होते हैं, जिसमें बटर नहीं होता है, जिसमें नमक नहीं होता है। एंड देन देयर आर डिप्स। इफ यू गो टू माय यूट्यूब चैनल, देयर इज अ गिल्ट फ्री डिप, दैट्स अ वेरी नाइस डिप, वो किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे हैं। आई कीप ऑन वंस दिस लाइव सेशन इज ओपन ओवर, आई शेयर ऑल दोज लिंक्स हियर, दैट विल हेल्प यू। And then we have Miss Sharma, and she says that we have my friend, she says, great tips, Tejji, thank you so much. And then Miss Mandra is also saying thank you for your tips on bloating, that's so nice of you. And then Meghna is saying very informative, and then she has informative, and then she has this question, iron rich foods that cause gastritis and how to deal with it. Yes, there are. And then Shivani Arora says absolutely informative. Thank you so much. I'm so blessed to have you all today. So yes, iron rich foods can cause gastritis because आयरन उन्हीं सब्जियों में आएगा, उन्हीं खाने में आएगा जिसमें फाइबर होगा, और फाइबर बहुत लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में देखना रहेगा। उसमें आयरन कहाँ होता है? सबसे पहले बात हुई कि पालक में आयरन नहीं होता है। पालक इज रिच इन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, उसमें बहुत थोड़ा सा आयरन होता है, और वो आयरन भी पालक में जो ऑक्सलेट है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि फिर वो हरी पत्तेदार सब्जियां आती है, आपका मेथी आ गई, बथुआ, फिर आपका ये अमरांथ आ गया, सरसों का साग आ गया। ये चीज़ें जो है ना, ये वाली जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनमें आयरन बहुत होता है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि आयरन को पका के खाना है। तो आप बथुए का रायता बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि बथुए का रायता पका के आप उसको, बथुए को पहले पानी में उबालें और फिर वो पानी यूज़ करें। इस केस में उस बथुए से विटामिन बी जो है वो सारा निकल जाता है, बी और सी निकल जाता है। तो यू विल हैव टू लुक फॉर एनी अदर ऑप्शंस फॉर बथुआ रायता। ठीक है, आप लौकी का रायता खा सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि आप, अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी ग्रीन्स आप मिक्स कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और पी लीजिए, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ग्रीन्स आर नॉट मेंट टू बी ईटन रॉ। कभी भी हमने इंडियन कल्चर में आज तक कच्ची हरी पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाई हैं, सिवाय पुदीने की चटनी और धनिया की चटनी के, क्योंकि हमारा डीएनए नहीं डाइजेस्ट कर सकता। इवन फॉर अमेरिकन्स आल्सो, फॉर एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, दिस ट्रेंड हैज स्टार्टेड वेरी रिसेंटली। ओके, और उसमें क्या होता है कि आपको इतना सारा बॉडी में नॉन डाइजेस्टेबल, अनडाइजेस्टेबल फाइबर मिल जाता है, जो आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी वॉश कर देता है बॉडी में से। तो अगर बॉडी में से अच्छा, चलो जो अनवांटेड बैक्टीरिया वो तो निकला ही निकला, बट अगर गुड बैक्टीरिया भी वॉश आउट हो जाएगा तो बॉडी में गैस्ट्राइटिस और ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो स्टॉप हैविंग इट सर,
sincere request to you all that stop having raw greens. ओके जो आप स्मूदीज बनाते हो, सुबह उठ के पालक का जूस पी लिया और ये केल का जूस पी लिया, इट इज नॉट हेल्दी फॉर द सिस्टम. दीज आर नॉट मेंट टू बी ईटन लाइक दिस. देर आर रिसर्चेस विच सेज कि अगर आप इनको कच्चा खाएंगे तो कहीं ना कहीं ओके वेट लॉस होता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइबर वॉश ऑफ कर लेता है सब चीज़ें आपकी बॉडी को. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा पका के लेना पड़ेगा. तो आप पालक को कच्चा नहीं खा पाते हैं, तो जैसे हम पराठा बना के खाते हैं, दाल में बना के खाते हैं, आलू पालक बना के खाते हैं, तो जहाँ कच्ची पालक खाई नहीं वहाँ लूज मोशन चालू हो जाते हैं, है ना. अभी वीट ग्रास का मेरी फ्रेंड ने पूछा, तो वीट ग्रास तो ओके, वीट ग्रास इज मेंट टू बी ईटन लाइक दिस. ओके, वीट ग्रास का तो जूस है, इट इज वेरी गुड क्योर फॉर कैंसर, फॉर मेनी अदर थिंग्स. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यू कैन हैव वीट ग्रास जूस, बट पालक का जूस और केल जूस और सेलरी जूस, these are the vegetables which are to be steamed, cooked and eaten. ओके, नाउ देर आर सैलड लीव्स. वो सैलड लीव्स तो बनी ही इसलिए हैं कि आप उनको सैलड की तरह लें, बट पालक और मेथी और बथुआ और ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो जिनका भी सुबह सुबह ग्रीन्स का जूस बनना शुरू हो गया, तो विच इज़ नॉट हेल्दी. स्पेशली अभी जो लौकी का जूस पीते हैं लोग, तो लौकी इज अ वेजिटेबल दैट हैज़ टू बी कुक्ड एंड ईटन, क्योंकि उसमें ऐसे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, वो तभी काम करते हैं जब आप उनको कुक करते हैं, जब वो उनको हीट मिलती है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो है ना, ठीक है, देर आर ट्रेंड. अभी 20 साल में बहुत ट्रेंड आ गया कि पालक का जूस पी लीजिए और लौकी का जूस पी लीजिए. एंड यू नो, पहले हमारी ग्रैंड मदर्स इन पालक और मेथी को, मूली को, खीरे को काट के टेस्ट करती थी, उसके बाद ही सर्व किया जाता था. तो अभी जब जूस बनता है तो आई डोंट थिंक एनीबडी टेस्टेस इट्स. और वो उसी वजह से 3-4 डेथ्स भी हुई हैं इंडिया में, कैजुअलिटीज भी हुई हैं, जब वो पालक जो लौकी का जूस पिया था जिसमें जो कड़वा था बहुत, और देन पर्सन थॉट दैट इट इज जितना कड़वा उतना हेल्दी है. तो इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लाइक दैट. तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. सो आयरन रिच फ्रूट्स जितनी भी हैं उनको आप अच्छे से धोइए, अच्छे से पकाइए, फिर खाइए. कोशिश करके पालक के साथ दही, दूध की चीज़ें ना लीजिए, जैसे कि कैल्शियम मत लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं इन दोनों के एब्जॉर्प्शन में. और बहुत सारा पालक खाने से गैस्ट्राइटिस होता है, गैस बहुत बनती है इनमें. ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो गैस फॉर्मेशन में गैस फॉर्मेशन को इन्हांस पुश करते हैं, तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर. तो थोड़ा खाइए और संभल के खाइए. एंड अगर एक्स्ट्रा एक्सेस है तो आप यू कैन कीप इट इन फ्रीजर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट to be taken care of. Then Ms. Shiva saying, thank you, madam. We'll send you the email with all the details. That's so nice of you. And then my friend, school friend says, nice, thank you. We'll connect with you soon for the diet. Never heard of milk and long. Yes, you should try it. What do you recommend for ladies with high blood pressure, menopause, and pre-diabetic? I think I'll take this topic next time, because I'll note it down that next time I'm talking about diet for women in pre-menopause, pre-post diet for women after 40s. That's my next topic, dear friends. So next live session topic will be diet for women in their 40s. So for high blood pressure, coffee is a big no-no. Golgappa is a big no-no. Anything which is packed. मैंने last week ही Instagram पे share किया है कि anything which is packed will have first, second, third ingredient. Out of these 3 ingredients, one will be sugar and the other will be salt. तो कोई भी चीज़ जो पैकेट में आ रही है, it is not good for hypertensive patients. पैकेट, बॉटल, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड एट होम. नमक, सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. तो उसमें क्या कर सकते हैं, नमक कम करने को बोलूँगी तो नहीं होता है कम. तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि नमक की जो स्पून है ना, उसका साइज़ छोटा कर दीजिए. बहुत फ़र्क पड़ता है नमक के स्पून का साइज़ छोटा होने से. तो दीज आर द 2 स्पून्स. ये मैंने रखे हुए थे किसी और पर्पज़ के लिए. सो दिस इज़ योर दाल स्पून, दिस इज़ योर डेजर्ट स्पून. ओके, तो आपको दाल सब्जी खानी है, सूप पीना है तो स्पून से पीजिए. बट जब आपको स्वीट डिश लेनी है तो आपका स्पून ये होना चाहिए. तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से.
तो इसलिए आज आई वॉज रेडी विथ ऑल दीज थिंग्स विथ मी. And pre-diabetic, yes, I'll surely take up this topic next time, because we are already through with 51 minutes of my session. So now I'll take it up next time. Wheatgrass, Ms. Aurora, I have already answered that yes, wheatgrass juice can be taken as directed by your dietitian, or once at, basically it is very good at 11 o'clock when your stomach is almost half empty. You're done with your breakfast and you're moving towards your lunch time. So that's a very good time. So there's a question, can bathua, methi, palak be cooked together? Yes, bathua, methi, palak can be cooked together. All the greens can be cooked together. So for the matter of fact, जब हम सरसों का साग बनाते हैं तो इट इज सरसों का साग, देन बथुआ, टू बैलेंस द पंजेंसी ऑफ द सरसों. फिर वो मेथी डाली जाती है और फिर पालक डाली जाती है. तो मेथी में एक बहुत अच्छी खुशबू होती है जो सरसों के खुशबू को थोड़ा सा मेलो डाउन करती है. और क्योंकि ये सारी सब्जियां जो हैं कोर्स होती हैं, तो फिर इसमें पालक डाला जाता है ताकि वो थोड़ी सब्जी मुलायम बन जाए. तो सरसों के साग में सरसों का साग, बथुआ, मेथी, पालक, ये सब डलते हैं. तो yes, you can cook them all together. And then we have my client, she says that your diet plan is very simple and very effective. Yes, thank you, Mrs. Nathavan. And she has a very nice name. Her name is Prafulla. So whenever I take her name, I am very happy, because Prafulla is being happy. तो जब भी हम खाना थोड़ा सा सोच समझ के खाएंगे, थोड़ा सा संभल के खाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं. फॉर लेडीज, सिंस वी हैव लेडीज हेयर, आपको कोई भी एक गिलास दूध का नहीं देगा. आपको खुद अपना दूध लेना पड़ेगा, खुद दही लेना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर बोन बैंक, so that once the menopause happens, once the menopause knocks your system, you are ready with your bone bank. आपका कैल्शियम बैंक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका बोन बैंक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो प्लीज ये चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें हैं. दही 2 कटोरी दिन में खाइए. 1 कटोरी आप दही खा सकते हैं, 1 कटोरी आप उसका छाछ बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल पानी में मिला के पी सकते हैं. मेरी हंकर्ड की गिल्ट फ्री रेसिपी है, मैं अभी उधर से इधर कॉपी पेस्ट करूंगी उसका लिंक. सो गिल्ट फ्री हंकर्ड रेसिपी है, दैट इज ऑल टाइम फेमस फॉर माय क्लाइंट्स, and it's a good party item also, so that can be taken. omega 3 fatty acids vegetarians के लिए it's a very big challenge. तो instead of going for 7 seals oils for ये सब चीजें, अच्छा walnuts लीजिए, 5 वॉलनट्स आप सारे दिन में खा सकते हैं. बादाम खा सकते हैं, बादाम और ये वॉलनट्स हैं. फिर अंजीर है ना, किशमिश है. इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है. और 2 चम्मच पिसा हुआ अलसी के बीज का पाउडर सुबह सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ पीना बहुत ज़रूरी है. अब ये जो अलसी है, ये अगर आप इनको वैसे ही साबित खा लेंगे तो इट विल गेट आउट ऑफ योर सिस्टम एंड इट इज़ अ टोटल वेस्ट फॉर एवरीवन. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अलसी के बीज को हल्का सा यू नीड टू एडिट दिस, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिए, ठंडा कीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए. और वो पाउडर जो है कीप इट इन फ्रिज, ओके. और उसको रोज सुबह नाश्ता करने से पहले 2 चम्मच आप पानी के साथ पीजिए. एंड इट हैज अ गुड amount of omega 3 fatty acids which is required for the entire day. I'm just looking if I missed out on any question. No, I think yes, I'm doing it done with all the questions. So I have another one more question कि मैं दिन के 3 एप्पल खाऊं और एक भी फ्रूट नहीं खाऊं तो चलेगा क्या? दिन के 5 फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं. सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, बट इट इज़ आई एम वेरी गुड एट दैट. तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में 1 फ्रूट खा सकते हैं. स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट विथ अ फ्रूट, ओके. तो आप बनाना, एप्पल या फिर पपाया, दीज आर द 3 थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट विथ. तो इफ यू आर ऑन अ सिटिंग जॉब थ्रू आउट द डे, आप बनाना तो लिस्ट से आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ एप्पल एंड पपाया ओनली, ओके. सो
this either one apple or one bowl of papaya, और पपाया के अंदर से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सीड्स वाला हिस्सा, और पील ऑफ कर लें, बट एप्पल का तो पील के साथ खाना रहेगा. सो दिस इज द portion size of papaya that you need to have. So this is one thing. ਫਿਰ second fruit is your tomato. For every lady it is very important to have one tomato at 11 o'clock. तो ये हमारे 2 fruits हो गए. ओके, सो 2 fruits हो गए. फिर 4 बजे के आसपास जब आप खाना खा के 1 घंटा हो चुका होता है और 5 बजे चाय का टाइम होता है, तो 4 बजे आप फ्रूट सैलेड खा लीजिए. अब ये फ्रूट सैलेड में आप 3 से 4 फ्रूट्स मिला सकते हैं. तो अगर आपने एप्पल सुबह नहीं खाया तो एप्पल शाम को मिला लीजिए, और अगर आपने शाम को आप सुबह पपाया खाया तो सॉरी, अगर सुबह पपाया नहीं खाया तो आप शाम को पपाया मिला सकते हैं. दैट कैन बी डन. 3-4 ग्रेप्स डाल सकते हैं, 1 स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, और सीजनल फ्रूट्स डाल सकते हैं. Now, when I'm saying grapes and strawberry, that means they are in season here right now. Then that's why I'm naming them. But otherwise, अभी के season में आपको पेरू मिलेगा, अमरूद, which is a very good source of iron, जिससे gastroenteritis भी नहीं होता है. It's soothing. तो आप उसके बीज निकाल दीजिए बीच में से और आप उसको खा सकते हैं. चीकू आ रहा है इस समय. That half a chiku can be a part of your fruit bowl. So again, this is the size of fruit bowl that you need to have, जिसमें ना नमक डाला होना चाहिए, ना शहद डाला होना चाहिए, और ऑल यू नीड इज ब्लैक फ्रेश क्रश्ड ब्लैक पेपर आप इसमें डाल सकते हैं. तो हो गए ना 5 फ्रूट्स. अब खाने के बाद बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाना. खाने के बाद फ्रूट खाने से वो आपकी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड्स में, एडिपोज टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू योर फ्रूट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्नैक ओनली, एंड इट शुड नॉट बी योर इट शुड नॉट बी योर स्वीट डिश. जैसे हम इंडियंस खाते हैं, खाना खाने के बाद आम खाएंगे, संतरा खाएंगे, नहीं. दे होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर डाइट, एंड दे शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्नैक ओनली. सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज 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 सब्सक्राइब मी एंड डू शेयर दिस live streaming on your social handles, so that many others can also get benefited from this. And then we have a question that weight gain के लिए कुछ बताएं. कुछ भी खाओ weight gain नहीं बढ़ता. Okay, this is a very relevant question, क्योंकि where on one side we are managing and we are struggling with weight loss, we are struggling with weight gain also. So first very important thing is what is the reason for weight loss? That की weight gain नहीं हो रहा है. It can be medical issue also. I need to check the birth weight also. Physical activity pattern, कहीं hypothyroid तो नहीं है, hyperthyroid तो नहीं, hyperthyroid तो नहीं है. Is what are the medications you are eating which are leading you to weight loss, जिसकी वजह से weight gain नहीं हो रहा है. Metabolism कैसा है, that needs to be checked. And then we'll plan a diet. But yes, सतही तौर पे अगर मैं बात करती हूँ तो वेट गेन के लिए प्लीज आप एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज करने से भूख खुलती है, जिसकी वजह से हम जो भी खाना खाएंगे वो हमें पच जाएगा. ओके, सेकेंड थिंग इज फाइबर वाला खाना खाइए, घी तेल ज़्यादा नहीं खाइए, ड्राई फ्रूट्स और नट्स खाइए. शी हैज़ मेंशन दैट हाइपोथायराइड है और वेट गेन नहीं हो रहा है. तो हाइपोथायराइड में मिस परवार, हाइपोथायराइड में वेट गेन एक बहुत बड़ा इशू है. अगर वेट गेन हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है. तो अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो आई विल सजेस्ट दैट यू गो ऑन लाइट फूड, आराम से खाएं, बट डू नॉट टारगेट फॉर वेट गेन. सो आई विल बी नीडिंग योर हाइट एंड वेट फॉर दिस क्वेश्चन. तो सतही तौर में बताऊं कि ज़्यादा घी तेल वाला खाना मत खाइए, खूब सारा फाइबर लीजिए, खूब प्रोटीन रिच डाइट खाइए, जिसमें आपके खाने में एटलीस्ट 2 कटोरी दाल सुबह, 2 कटोरी का दाल रात को होनी चाहिए. सुबह आपके खाने में सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें आप दलिया खा सकती हैं, ओट्स खा सकती हैं, एक मिक्स वेजिटेबल सैंडविच खा सकती हैं जिसमें उबला आलू होना चाहिए, खीरा, टमाटर, गाजर होनी चाहिए. बटर से आप उसको सेकते समय लाइन कर सकती हैं, बट अंदर उसके हरा टमाटर ही होना चाहिए. With 5'2" and 55 weight, this is absolutely normal. This is absolutely normal, Suru. I think you should not go ahead with weight gain. मत सोचो ज़्यादा. And what will be your age? I also want to know that. तो ये कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज खूब करें, खूब नींबू पिएं,
खूब सूप पिए जिससे कि आपकी भूख खुले, और भूख खुलेगी तो ज़्यादा खाना खाया जाता है, और जब ज़्यादा खाना खाया जाता है बॉडी रिक्वायर्स इट तो उतना ज़्यादा पच भी जाता है। तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज सिर्फ अगर आप खाना खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा, बट वो वेट गेन एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में होगा। तो जब भी हम वेट गेन की बात करते हैं इट हैज़ टू बी मोर ऑन मसल गेन। तो ऐसा खाना खाइए जो प्रोटीन रिच हो। पनीर खाइए, आप दिन में रोज पनीर, घर का बना हुआ पनीर खाइए, घर का बना हुआ दही लीजिए, 2 ग्लास दूध लीजिए, दालें लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, सैलड खाइए, चपाती खाइए, एक चपाती एक्स्ट्रा खा लीजिए। और क्योंकि व्हेन आई एम एडवाइजिंग यू टू वॉक एंड एक्सरसाइज, आई एम एडवाइजिंग यू द फूड अकॉर्डिंग टू दैट। तो अगर मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा चपाती लीजिए इट मीन्स आप ज़्यादा वॉक भी कीजिए। नन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स कैन बी मिस्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मत सोचिए कि मैं समोसे, कचौरी और कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। डू नॉट गो ऑन दैट पाथ, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। अच्छा खाइए, सेहतमंद खाइए और खूब सारा फाइबर वाला खाना खाइए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर ऑलमोस्ट 1 hour and 2 minutes and more than that. So I'll try to cut it down, and the take home message for the day is, did you notice कि मैंने I'm taking sips of water. The size of my water is, the glass is very less as compared to this tea mug. तो थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए सारे दिन में। थैंक यू फॉर बेयरिंग मी। जिन लोगों को, हाँ मैं ये कप लेके बैठी थी इनके बारे में तो बताया ही नहीं, तो जिन लोगों को ये कप में चाय पीने की आदत है और वो मुझसे पूछते हैं कि प्लीज़ आप हमारा चाय कम तो नहीं कर दोगे, हमारी चाय बंद तो नहीं कर दोगे, तो इस कप से आप इस कप पे शिफ्ट कर जाइए। ओके, फिर जब आपको इस कप की आदत पड़ जाएगी तो इससे छोटे कप में शिफ्ट कर जाइए। एंड दिस शिफ्टिंग शुड हैपन इन 1 month। ये नहीं कि आज एक कप और उससे छोटा और फिर उससे छोटा, नहीं। टेक योर टाइम। अगर वजन एक दिन में नहीं बढ़ा है तो प्रॉमिस, आई गारंटी यू वो एक दिन में नीचे नहीं आएगा। तो स्लोली स्लोली नीचे आना चाहिए वजन आपका। और हैबिट्स भी, इट टेक्स टाइम टू कम डाउन स्लोली स्लोली। आपको एक हैबिट फॉर्मेशन में 21 दिन लगते हैं। तो गिव योर सेल्फ दिस टाइम, गिव योर बॉडी दिस टाइम टू एडजस्ट टू द न्यू थिंग्स। ओके, हम एक रात में अपने आप को नहीं सुधार सकते, हम एक रात में अपनी सारी लाइफस्टाइल्स नहीं चेंज कर सकते हैं। एक दिन एक्सरसाइज करने जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन नहीं अच्छा लगेगा, बट स्टिल पुश योर सेल्फ हार्ड कि एटलीस्ट गो एंड टेक 1 राउंड। अच्छा ठीक है, जिम जाने की इच्छा नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जिम जाओ, 5 मिनट एक्सरसाइज करके वापस आ जाओ, तो एटलीस्ट अटेंडेंस लगा के। सो यू नीड टू बी फर्म दैट 21 दिन तक मुझे वो काम करना है, एंड 22nd डे ऑनवर्ड्स इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। तो हैबिट फॉर्मेशन टेक्स 21 days। सो इतना टाइम हम देते हैं कि ये करो, तो वही बादाम और ये सब एटलीस्ट count it for 21 days. Yeah, this is mentioned in all the okay, this is mentioned in all the records and research findings also, that yes, you need to have 21 days, give your body 21 days to show you good results. And then I have this student of mine, she says, Bhavna, I'm your student, I feel really wonderful to listen to you again after so long. This one is for you, Bhavna. Looking forward to many such more sessions. That's so nice to connect with you, Bhavna. You can Gmail me and then I'll share my number with you there. That's so nice to connect with you. You want me a good smile on my face. And so are my friends who joined me, and such a boost. It's such a boost to your confidence when your friends join you and they ask you questions. So to deviate हो गई थी मैं अपने टॉपिक से, तो जी take home messages that eat healthy, give your body 21 days to get into a new system, do not count calories, give that responsibility to your dietitian. What you have to count is count colors in your plate. It should have cereal pulse combination, which is our traditional हमारे ट्रेडिशन में है सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन। जैसे हम मिस्सी रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, इडली खाते हैं, तो दीज ऑल, या इडली खाते हैं, डोसा बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारा ढोकला बनता है विच इज सोक्ड ओवरनाइट। तो दीज आर ऑल सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन। मिस्सी रोटी बनती है दही के साथ, तो वो कॉम्बिनेशन ब्रेकफास्ट में सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपकी डेली डाइट में 2 कटोरी दाल की होनी चाहिए, इतना ही बड़ा सूप बोल होना चाहिए,
और सूप आपका बिल्कुल भी छना हुआ नहीं होना चाहिए, आप उसको ब्लेंड कर लीजिए बट बिना छाने सूप पीजिए। और फ्रूट बोल इतना होना चाहिए एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्नैक। एम्प्टी पेट एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए फ्रूट आपको। और आपका जो स्वीट है उसके लिए ये वाला स्पून है। और ऐसी कटोरी 2 से 3 कटोरी दही की आपको सारे दिन में खानी है। 2 ग्लास दूध पीने हैं। टी शुड नॉट बी अ फर्स्ट ड्रिंक इन द मॉर्निंग। जब आप ये खा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे, तो आपको चाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डू नॉट गो ऑन फॉर मील रिप्लेसर्स एंड वे प्रोटीन। घर का बना पनीर और पनीर का जो पानी होता है, जो पनीर का पानी होता है दैट इज़ वे, तो वो वे प्रोटीन होता है। तो आप उस पानी को फेंकिए मत, उससे आटा गूंदिए, दाल बनाइए, नहीं तो उसको पी जाइए, उसको ठंडा करो, क्योंकि गर्म थोड़ा टेस्टलेस होता है। तो आप उसको ठंडा करो, उसमें नींबू निचोड़ो, काली मिर्च निचोड़ो, और इट कैन बी अ वेरी गुड प्री मील ड्रिंक फॉर यू। तो यू कैन हैव दैट। उसको फ्रिज में रख लो, दही खाओ, पनीर खाओ। हमारे खाने में सब चीज़ें हैं, हम भूल गए हैं थोड़ा थोड़ा खाना उसको। तो you all ladies made my day, and I'll connect you. And thank you so much to all of you and my this sweet student and my my school friend, and then my friends from Ethiopia and Bahrain, whoever joined me, and then I have few more guests, and I'm so happy to connect with you all. Stay connected. Wishing you all a very happy Women's Day. Why only once a day? Every day is a Women's Day. So every day I'll wish you a happy Women's Day. Keep connected, stay connected. Feel free to connect. I have already mentioned my Gmail ID here. Eat healthy, stay healthy, chew your food properly, and stay happy, stay cool, stay calm. See you. Bye.